Hello everyone. Today we will start with one of the important topic from statistics, class 11 commerce mathematics from Maharashtra State Board, that is partition values. It's very important topic and very simple also. So let's see what are the partition values. Now जैसे कि इसका नाम है partition values, मतलब ये इस तरह की values है जो divide करती हैं. अब किसे डिवाइड करती हैं वो हमें देखना है. नाउ स्टैटिस्टिक्स मतलब इट इज डेटा, एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड द डेटा. सो पार्टीशन वैल्यूज जो होती हैं वो वैल्यूज है विच डिवाइड्स डेटा इनटू n इक्वल पार्ट्स. डेटा मींस न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन. तो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन जो कि आपको अलग अलग फॉर्म्स में दी गई होती है, तो जो स्टैटिस्टिक में हम डेटा देखते हैं वो बेसिकली 3 टाइप का डेटा होता है. वो होता है रॉ डेटा, फिर होता है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन काइंड ऑफ डेटा, एंड थर्ड टाइप होता है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो इस तरह से 3 तरह का डेटा होता है. ना ये 3 तरह के डेटा के लिए कुछ वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उनको हम कहते हैं पार्टीशन वैल्यूज. जो अब तक आपने पार्टीशन वैल्यू देखी होगी टिल 10th स्टैंडर्ड, वो है मीडियन. मीडियन एक ऐसी वैल्यू है विच डिवाइड्स डेटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. तो उससे आगे बढ़ते हुए वी विल बी सीइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टीशन वैल्यूज. सो जो आपका 11th स्टैंडर्ड के लिए पार्टीशन वैल्यूज है वो है 3 तरह की पार्टीशन वैल्यूज है. क्वार्टाइल्स, फिर डेसाइल्स एंड परसेंटाइल. तो इस तरह से 3 तरह की पार्टीशन वैल्यूज हमने देखनी है. पहला क्वार्टाइल. नाउ क्वार्टाइल जो है इट डिवाइड्स डेटा इनटू फोर इक्वल पार्ट्स. 4 इक्वल पार्ट्स में ये डेटा को डिवाइड करती हैं. नाउ क्वार्टाइल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय QI and I goes from 1 to 3. मतलब 4 इक्वल पार्ट्स में जो वैल्यूज डिवाइड करती हैं डेटा को, they are called as quartiles, and there are 3 quartiles, Q1, Q2 and Q3, like this. So जो Q1 है, Q, that is called lower quartile. Q1 को हम lower quartile बोलते हैं. Q2, as you know, Q2 divides data into 2 equal parts. This is second quartile, which is called median, and Q3 is called upper quartile. तो जो फर्स्ट टाइप की पार्टीशन वैल्यू है वो है क्वार्टाइल्स, which divides data into 4 equal parts. Notation is QI, and there are 3 quartiles: lower quartile, median and upper quartile. Now next type is deciles. Now deciles divides data into 10 equal parts. ये जो है डेटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं. देयर आर deciles which are represented by DI. 10 equal parts के लिए there are 9 deciles. So I is from 1 to 9. D1, D2, D3 like this till D9. 9 deciles are there. Similarly, percentile is there. Now percentile divides data into 100 equal parts. So for 100 equal parts, there are 99 percentiles. So they are represented by PI, where I goes from 1 to 99. तो इस तरह से हमें 3 types of partition values are there: quartiles, deciles and percentile. And these are the notations. There are 3 quartiles, 9 deciles and 99 percentiles. Now with the help of these values, we can
do some analysis of data. जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, suppose that data is represented by this line, suppose. Okay, now let's talk about quartiles. Now quartiles will divide this data into 4 equal parts, and there are 3 quartiles like this. So Q1, Q2, Q3. Now, since these quartiles divides data into 4 equal parts, so you can say that each part will contain 25% of data, like this, 25%, 25% each. So what we can say is कि below Q1 25% of data lies, and above Q1 75% of data lies. Similarly, below Q2 50% and above Q2 also 50%. And for Q3, below Q3 75% of data is there, and above Q3 25% of data is there. So this is about quartiles. Now same thing can be done for deciles. If this is the data, deciles divides data into 10 equal parts. So D1, D2, D3, like this till D9. In between, other deciles are also there, and each part will contain 10% of data, like this. So if we want to say something about deciles, then what we can say is that 10% of data lies below D1 and 90% of data lies above D1. Similarly, if suppose D7 is here, somewhere here, so for D7 we can say that below D7 70% of data is there, and above D7 30% is there. For D9, below D9 90% and above D9 10% data lies. Similarly, for percentile also we can say like this, but percentile के लिए each part will contain 1% of data. So जैसे कि अगर आपको P23 के बारे में पूछा जाए, तो P23 का मतलब है below P23 23% data lies, and above P23 100 minus 23% of data lies. So this is how analysis can be done. Now we know what are quartiles, deciles and percentiles. Now according to the type of data, we will see formula to find decile, percentile and quartile. So let's see the formula to find quartile, decile and percentile. So there are two sets of formulae. First is for raw और ungrouped data. Raw और ungrouped data के लिए एक set है, and grouped data के लिए एक दूसरा set है. So as far as raw data or ungrouped data is concerned, QI is simply I times n plus 1 upon 4th observation. So देखिए बच्चों, QI, right? I, N stands for number of observations, कि कितने observations दिए हुए हैं, डेटा में कितने values हैं, plus 1 upon 4. Since it is quartile, so it is divided by 4. And I की जो value है, as you know that there are 3 quartiles, so I will take values 1, 2, 3. Now similarly, अगर आप quartile का formula याद रखते हो, तो DI, that is decile, and percentile याद रखना बहुत easy है. It is simply I, same as above, n plus 1 be same PI may be I, and numerator is n plus 1. I'll tell you what is the denominator. Observation. Similarly, observation. Now when it is quartile, data is divided into 4 equal parts, so it is divided by 4. For decile, it divides data into 10 equal parts, and for percentile, it divides data into 100 equal parts. So quartile के लिए it is divided by 4, for decile it is divided by 10, and for percentile it is divided by 100. So these are the formulae when data is raw or ungrouped.
अब देखिए डेसाइल में दिस आई विल टेक वैल्यूज फ्रॉम 1 2 लाइक दिस टिल 9 एंड फॉर परसेंटाइल आई का वैल्यूज जो होगा दैट विल बी 1 to 99. मतलब अगर आपको पूछा जाए कि भाई बताओ D2 का फॉर्मूला क्या होगा, तो D2, अगर आपको D2 का फॉर्मूला लिखना है तो I की जगह पे 2 रखिए, 2 टाइम्स n+1 अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन, एंड n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि हम डेटा से, जो डेटा दिया गया है उससे फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ फॉर ग्रुप्ड डेटा, ग्रुप्ड डेटा के लिए QI इज L प्लस H अपॉन F, ब्रैकेट में second term is CF. I'll tell you what is first term. Now same thing is for DI. Same चीजें हमने लिखनी है DI के लिए, L plus H upon F. ब्रैकेट में second term is CF. In between minus sign. PI भी same, L plus H upon F. Then minus CF. अब जो ये first term है, that differs for QI, DI and PI. तो QI के लिए जो है it is IN upon 4 because data is divided into 4 equal parts. DI के लिए it is IN upon 10 and for PI it is IN upon 100. So this is the only difference. Otherwise formula is same. Now QI में आपको पता है कि I will take values 1 2 3. For DI it is 1 to 9. And for PI, I is from 1 to 99. Now, if you will see, there are some terms in this formula, that is L, H, F and CF. So, L is the lower limit. If it is quartile, then quartile class. H is the width or height of that class. F is the corresponding frequency of that class, the class in which QI lies. And CF is the cumulative frequency of the preceding class. Okay, same way, if it is for DI, then L is the lower limit of the class in which DI lies. H is the height of that class, F is the corresponding frequency and CF is the cumulative frequency of preceding class. अब ये values हम निकालते कैसे हैं, that we will see when we will solve examples. So this is how you can remember formula for quartile, decile and percentile. For raw ungrouped data, one set is there, and for grouped data, second set is there. And whatever questions are there based on this, I will be uploading a video soon where we will be solving problems based on finding quartile, decile and percentile for various types of data. Thank you so much.